Hello students, good evening. Welcome to today's session. So let us continue our chapter of life processes. Life processes ये जो है chapter 6 for grade 10 science. तो इस chapter में 4 major life processes हमें पढ़ने हैं. Nutrition, respiration, transportation and what's the fourth one? Yes, excretion. So nutrition we have done and we are continuing with respiration. तो लास्ट लेक्चर में मैंने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन दिया था और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हाउ दिस हैपेंस दैट आई हैड टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास. सो टुडे वी विल बी सीइंग एग्जैक्टली ये ह्यूमन बीइंग्स में हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा कौन सा सिस्टम है विच हेल्प्स देम टू रेस्पायर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. You can also watch the previous sessions on the YouTube channel, Learn Fatafat YouTube channel. वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारे पिछले सेशंस का वीडियो मिल जाएगा. तो आप सारे टॉपिक्स जो पिछले आपने अगर मिस किए होंगे तो आप वहाँ पे से देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. ये है 5th ईयर. रेस्पिरेशन कंटिन्यू करते हैं. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में ये थोड़ा सा हमने देखा था. ह्यूमंस का अब हम देखते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम डेवलप है जिससे रेस्पिरेशन में हमें ईज होती है, दैट हेल्प्स अस इन रेस्पिरेशन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग. आई होप यू नो बाय नाउ कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, तो जस्ट टू से इन अ नटशेल ब्रीदिंग जो होती है वो इट इज मेनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ठीक है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर करना. whereas respiration क्या है? respiration is it's actually a chemical reaction, it's a biochemical process. क्या होता है इसमें? the breakdown of glucose to release energy. तो ये बेसिकली डिफरेंस है ब्रीदिंग में एंड रेस्पिरेशन में. सो ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व दिस मूवमेंट्स. क्या होता है इसमें? अगर आप नॉर्मली देखोगे कोई भी ह्यूमन बीइंग को, अगर वो सोया भी है तो यू विल नो दैट यस ही इज स्टिल ब्रीदिंग. कैसे? यू कैन सी द चेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली. ये मूवमेंट बाहर दिखती है. ब्रीदिंग बाहर देख सकते हैं बाहर से, बट रेस्पिरेशन दैट इज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी सेल वो बाहर से नहीं देख सकते, है ना. सो व्हेन इट एक्सपैंड्स, ह्यूमंस में व्हेन इट एक्सपैंड्स इट्स मतलब क्या? द लंग्स. व्हेन द लंग्स एक्सपैंड, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स. दैट इज नोन एज इनहेलेशन. ओके, सो वी विल सी द डायग्राम आल्सो. तो ये है लंग्स एक्सपैंड कर रही हैं. कैसे? सो व्हाट हैपेंस इन इनहेलेशन, लेट मी टेल यू. आप वो सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स जो हैं, व्हाट आर द मूवमेंट टेकिंग प्लेस? एयर अंदर जब लेनी है तो रिब्स क्या करेंगी? रिब्स विल मूव. यू नो, अगर आप इनहेल करके देखो तो रिब्स का मूवमेंट क्या होगा? दे विल मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. And then the diaphragm, जो diaphragm होता है, this muscular thing, diaphragm dome shaped होता है जो lungs के नीचे, the diaphragm will contract and it will move downward. ठीक है, contracts and moves downward. So when this diaphragm will move downward, what do you think? ये जो chest cavity है, जो space है, ये increase होगी कि decrease होगी? Diaphragm, if it moves downward, you can say that the chest cavity will increase. Chest cavity will increase and the lungs will obviously expand. अब एयर के बारे में, मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में और मूवमेंट ऑफ गैसेस में, what is the general rule? The gases always move from a high pressure area to a low pressure area, isn't it? Lungs जब expand करती हैं
तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है और प्रेशर डिक्रीज हो गया है उनमें, जबकि pressure of the outside air, atmospheric air is higher, and that's why the air will travel from the high pressure area to the low pressure area. That is, atmospheric air का जो pressure है high है, so the air will come from the air into the lungs, यानी कि body के अंदर, ठीक है, into the lungs. So this is what happens in inhalation. एक अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना movements, तो exhalation में you can write the exactly the opposite thing होगा, ठीक है. exhalation में अभी आप सोच लो क्या होगा, ribs will move downwards and inwards, इसका opposite. diaphragm क्या होगा, relax and moves upwards. तो diaphragm जब upwards होगा तो ये जो chest cavity है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑफ विच लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड दैट्स हाउ एक्सहेलेशन में द एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स. ओके, सो दिस इज अ जनरल थिंग अबाउट इनहेलेशन एक्सहेलेशन विच आई थिंक आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, बट स्टिल आई हैव जस्ट रिकैप्ड इट फॉर यू अ लिटिल. नाउ ये जो एयर, ये तो हमने ब्रीदिंग की बात कर ली, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. बट रेस्पिरेशन के लिए ये जो एयर है, जो एयर में जो ऑक्सीजन है, दिस हैज टू रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. हाउ विल इट रीच ईच एंड एवरी सेल? कौन लेके जाएगा उसको? ब्लड लेके जाएगा. तो नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ अ मेथड how this oxygen will enter the blood, how will it be diffused in the blood, कहाँ पे होगा ये और कैसे होगा? सो उसके लिए जो सिस्टम है, ऑक्सीजन हमारी ब्लड में कब एंटर करेगा और कैसे, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सेल्स में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, दैट विल ऑल्सो फर्स्ट एंटर द ब्लड एंड देन इट विल बी एंटरिंग द लंग्स और वहां से बाहर फिर ये पैसेज के थ्रू जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है ये कैसे होगा, दैट वी विल बी सीइंग नाउ. सो आई होप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज क्लियर. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे. सो दीज आर ऑल द मस्कुलर मूवमेंट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एयर इज थ्रोन आउट. ठीक है, ये सारा सीरीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक्सहेलेशन का. नाउ द एयर विल एंटर इन. So respiratory passage जो है हमारा, what can we say? It starts where? Starts and it goes till where? Respiratory passage जो है, can you attempt it? Can you tell me in the chat section? So you know के start तो obviously nose में होगा. Okay, nose, nasal cavity, nostrils, जो भी है, and it will continue till the lungs. lungs में आने के बाद वो जो air है उसका जो oxygen है वो blood में mix हो जाएगा. It will get diffused. How? That we will be seeing. So let us see when the air is entering the nostrils. nose में जो दो पैसेज हैं, दो होल हैं, they are the nostrils. तो वहां से air enter होगी. Here what happens? Air which is entering will get filtered. ठीक है, क्या क्या होगा इसको? Let me tell you. Hair in the nostrils. What is the function they will provide? They will help in the filtering of the air. जो germs या bacteria है वो सारे filter हो जाएंगे. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म, बैक्टीरिया, एंड ऑल्सो द म्यूकस. म्यूकस ये पैसेज में होता है और इसमें भी नॉस्ट्रल्स में होता है, नेजल कैविटी में. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प. म्यूकस क्या करता है? ट्रैप कर लेता है इन जर्म्स को, एंड दस वो जो एयर अंदर जा रही है दैट विल बी ऑलमोस्ट जर्म फ्री. तो ये इनका फंक्शन है. सो द एयर विच इज एंटरिंग हियर थ्रू द नॉस्ट्रल्स. ऑल्सो ये एयर पैसेज में ये आगे जाने के पहले इट इज ऑल्सो वार्म्ड. ठीक है, वार्म हो जाती है ये एयर
after it enters the nasal cavity, and also it uh, yeah, it becomes warm. ठीक है. So filtering, hair in the nostrils का function है filtering the germs, और mucus का function mainly you will remember is trapping those germs. And then ये देखो, basically this is the uh, outline. Throat है, फिर throat and then the lungs. ठीक है. Now let's see the passage that we will see. So inside the throat, देखो एयर पहले देखो नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी ये, from the nostrils it will then enter the pharynx. Okay, pharynx. So you know pharynx is this, यहाँ पे common passage होता है जो जहाँ पे एयर भी जाती है और फूड भी जाता है, एंड देन आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है. pharynx will get divided into two parts. एक होगा फूड पाइप और दूसरा होगा विंड पाइप. Wind pipe is also known as trachea. Now air has to enter only the wind pipe and food has to enter the food pipe. तो ये कौन इंश्योर करेगा? उसके लिए यहाँ पे epiglottis होता है. There is a flap. Okay, epiglottis. तो what does this epiglottis do? ये जो है whenever the food particle enters, तो this will close the wind pipe, और फूड जो है फिर वो फूड पाइप में ही जाएगा, क्योंकि फूड शुड नॉट एंटर द विंड पाइप, देन इट इज प्रॉब्लमैटिक. तो दिस फ्लैप व्हिच इज एपिग्लॉटिस, ये इंश्योर करेगा. यस ऐश्वर्या, नाइस क्वेश्चन. जो दो भी ये वीडियो देखेगा वो सीखेगा. So this epiglottis is going to ensure that no food particles will enter the windpipe, which is also known as a trachea. अब pharynx के बाद, so pharynx के बाद air जो है कहाँ पे जानी चाहिए? It will go to the trachea, which is the windpipe. और food pipe जो है, that is the esophagus, वो हमने digestive system में पढ़ा था already, है ना? So once it enters the trachea is this part जो throat में है. ठीक है. ट्रैकिया में you have to remember there are the rings of cartilage. Rings of cartilage, and what is their function? Their function is to prevent the collapse of the trachea. ठीक है, of the windpipe, of the air passage. ये अगर नहीं होंगे rings of cartilage तो वो collapse हो सकता है. That's why these cartilage rings are very important. Now after the trachea, then so ये ट्रकिया से आके यहाँ पे here there is the bronchus. Okay, bronchus ट्रकिया के बाद, एंड ट्रकिया के पहले यहाँ पे larynx भी है, बट दिस इज मेनली, इसका फंक्शन क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है. दैट इज टू इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं. सो दैट वी विल नॉट बी स्टडीइंग इन डिटेल इन रेस्पिरेशन. So after the trachea, ये जो बेस है, बेस ऑफ द pharynx, वहां पे larynx होता है. larynx के बाद होगा trachea. After the trachea there is a bronchus, and then ये branch out होता है. Let me show you. Okay, so see, these are the rings of cartilage. ये वाले rings of cartilage जो प्रिवेंट करते हैं ट्रकिया को कोलैप्स करने से. And after that the air will enter here. So this is the bronchus, and then this divides into two main parts. So what are these two known as? These two are the bronchi. तो bronchus इसका singular होता है, and bronchi is the plural. फिर ये जो ब्रोंकाई है, एक लेफ्ट लंग में जाएगा, यानी दिस वन, एंड एक जाएगा राइट लंग में. ठीक है, आई होप यू नो विच वन इज द लेफ्ट लंग एंड विच वन इज द राइट लंग. ये लंग्स हैं. तो आपको पता है साइंस में द डायग्राम्स आर द मिरर इमेज. तो दिस साइड इज द राइट लंग एंड दिस वन इज द लेफ्ट लंग, एंड देन दीज ब्रोंकाई, they will further branch up into small branches known as bronchioles,
एंड इन ब्रोंक्यूल्स का जो टर्मिनल एकदम एंड एंड कहाँ पे होगा, देयर विल बी एयर सैक्स known as alveoli. Alveoli singular है इसका, alveolus. So this is the passage of air. ठीक है? Okay, so let's see. Further, the air will enter the lungs, and in the lungs ये branches हैं, and these are the alveoli. They are small balloon-like structures. ठीक है? Circles. And ये ऐसे क्यों होते हैं, यू नो लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स दिखते हैं, ये ग्रेप्स का गुच्छा कैसे दिखता है वैसे ही एल्वियोलाई दिखते हैं. एंड ये ऐसे क्यों है, देयर स्पेसिफिक फंक्शन इज दैट दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन. इसलिए ये ऐसे छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे सरफेस एरिया जो है ज्यादा बढ़ जाता है. तो दिस एब्सॉर्प्शन, ये एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन इंक्रीज किसके लिए करना है, व्हाट इज गोइंग टू गेट एब्सॉर्ब्ड हियर. सो यू कैन सी हियर each alveolus is bounded by a network of capillaries. Blood vessels दिख रहे हैं आपको. See, these are the blood vessels. So this is the alveolus. You have to remember alveolus, alveoli. These are the actual site of gaseous exchange in humans. Okay? यानी कि जो ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन हमने एयर ब्रीथ की थी अंदर, यानी गैशियस फॉर्म. तो जो ऑक्सीजन है गैशियस फॉर्म में, वो यहां से एंटर करेगा इन द ब्लड. तो यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दिस इज व्हाट वी हैव टू सी के हाउ विल ऑक्सीजन रीच ऑल द सेल्स, ओनली वंस इट एंटर्स द ब्लड, एंड दिस इज वेयर इट विल एंटर द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Okay, so let us see that also. Let me show you. And each bag of alveoli is known as the alveolar sac. तो इस अगर हम मैग्नीफाई करके देखें कोई एक alveolus को, ठीक है, समझो ये एक alveolus है, यानी कि एक छोटा सा बलून है, उसके आजू बाजू देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. तो ये एक ब्लड वेसल दिखाया है. सो व्हाट हैपेंस हियर, ब्लड वेसल में से, ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आई थी, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल एंटर, एंड द वॉल्स ऑफ द alveoli आर वेरी वेरी थिन, so it will diffuse into the alveoli. एंड जो हमने इनहेल की थी एयर, उसमें से ऑक्सीजन जो था दैट विल एंटर द ब्लड वेसल हियर, वो ब्लड में एंटर करेगा बाय डिफ्यूजन. ओके, so air is taken into the lungs from which oxygen is absorbed by the, yes. अब यहाँ पे one more important thing you have to know. What is this hemoglobin? ये तो आपने सुना होगा बहुत बार, hemoglobin. hemoglobin है ब्लड में, but what is it and इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है ब्लड में? Do you know about it? That is having a very important function. Hemoglobin is the respiratory pigment. Okay, it is a respiratory. Okay, I hope spelling दिख रहा है आपको ठीक से. The respiratory pigment in humans, that is a hemoglobin. And what is the function of hemoglobin? This has a high affinity for oxygen. For the oxygen. तो क्योंकि ब्लड में जो hemoglobin है, it has a high affinity, यानी कि बहुत अट्रैक्शन है इसको ऑक्सीजन के लिए. तो जो ऑक्सीजन गैस से यहाँ पे हमने ब्रीद इन की थी, जो लंग से यहाँ पे लंग्स में जो एल्वियोलस में है, एल्वियोलर सैक में, वहां से ये डिफ्यूज करेगी इन द ब्लड वेसल, ब्लड में, एंड द हेमोग्लोबिन विल कंबाइन, क्योंकि इसकी बहुत हाई एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन, इट विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन. एंड इन दिस फॉर्म ऑक्सीजन को वो
ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में पूरे हर सेल को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ ऑक्सीजन इज कैरीड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑल्सो सम ऑफ इट इज ऑल्सो डिजोल्व इन द प्लाज्मा, थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में प्रोड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके, दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर द ब्लड एंड ब्लड में हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी इज नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल इट विल कंबाइन, ऑक्सीजन जितनी एफिनिटी तो नहीं होती, बट इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बामिनो hemoglobin, and in this form it is brought back to the alveolar sac from where it will be exhaled out। ठीक है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन और बाकी प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होके आता है in the blood। So and what is, just to understand कि hemoglobin इतना important क्यों है, ये hemoglobin अगर नहीं होता, अगर सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से अगर ये गैस जो है ऑक्सीजन गैस अगर इसको पहुंचना होगा, ऑक्सीजन यानी कि वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू बी प्रिसाइज, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इफ इट हैज टू रीच from the lungs to the toes, then it would have taken approximately 3 years to reach if there was no hemoglobin, no respiratory pigment, yani ki no mechanism by which oxygen can be combined and transported, okay, within the blood. So I hope now you understood what is the importance of this respiratory pigment. So respiration में हमें जो अचीव करना था, क्या अचीव करना था respiration में, you know the equation, you remember क्या थी equation, the glucose had to combine with oxygen। तो ये जो ऑक्सीजन है यानी कहाँ पे, सेल्स में, तो in the cell this oxygen is provided इस मैकेनिज्म से, ठीक है, to each and every cell the blood vessels will carry it and it will be diffused into each and every cell in this way, we are inhaling it through the nose and then it reaches each and every cell in this form। I hope it is clear। In case you have any doubts, you can ask me in the chat section। And during the contraction, in the start, as I told you, when the chest cavity decreases, the lungs contract, then this carbon dioxide which is there in the alveolar blood vessels is brought in the lungs, which is then released out through the nostrils। Same passage which oxygen gas follows from the nostrils to the alveolar sac, वो same passage कार्बन डाइऑक्साइड फॉलो करेगा फिर से alveolar sac से बाहर आने के लिए। तो अगर आप सोचोगे तो देखो, alveolar sac से ऑक्सीजन यानी ब्लड से आ गया ये alveolar sac में, ठीक है। हेलो अक्षरा। So from the alveolar sac कहाँ है, लंग में है ना, लंग्स में। alveolar sac से फिर वो ब्रोंकाई में जाएगा, which is again in the lungs, ब्रोंकाई से ब्रोंकस में, और लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, we are now going the reverse path। लंग्स के बाद कहाँ जाना चाहिए उसको, yes, trachea, right, trachea, that's a windpipe, windpipe से उसके बाद कहाँ पहुंचेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, windpipe के बाद this will reach the larynx, then it will reach the pharynx, and after the pharynx it will reach the nostrils या nose, and वहां से वो exhale हो जाएगा to the outside। ठीक है, is it clear? So this is the pathway, इसको बाहर से अंदर का पाथवे और अंदर से बाहर दोनों का मैंने आपको दिखा दिया सीक्वेंस, which is the same, you have to just reverse it। ठीक है,
And please remember the importance of a respiratory pigment, that is hemoglobin. So now let us do some questions to understand today's topic even better. Okay. चलो तो पहले ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड नाउ, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ऑक्सीजन जो है नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल्स की एयर से आएगा अंदर and it will follow that pathway and will reach the lungs. Lungs में कहा alveoli, and from each alveolus this will enter the blood vessels which is surrounding it, the blood capillaries. वहां पे जाके ये combine करेगा hemoglobin से to form oxyhemoglobin which will be transported in this form. And carbon dioxide का क्या है, carbon dioxide will be combining with hemoglobin to form carbaminohemoglobin, and in this form it will be transported back to the alveolar sac. ठीक है. Okay, so let us see the next one. ठीक है. Now here, how are the lungs designed in human beings to maximize the area of exchange of gases? So maximum area for exchange of gases कौन सा पार्ट प्रोवाइड कर रहा है, which main thing in the lungs? So obviously वो है alveolar sac या alveoli, जो balloon like structures हैं. Okay, balloon like structures which provide the high surface area for the exchange of gases. Okay, let's see the next one. Which of the following statement or statements is or are true about respiration? चार statement दिए हैं, so we'll read them one by one and let's see which one is true and which one is false. So the first statement is, during inhalation ribs move inward and diaphragm is raised. So what do you think? Diaphragm यहाँ पे था and this was the rib cage. ठीक है, rib cage was here, ये rib cage. तो diaphragm inhalation में मैंने आपको क्या बताया था, ribs will move, inhalation में ribs will move inward या outward. ये यहीं पे गलत है, ribs don't move inward, so ये वाला false है. ठीक है. Second is, in the alveoli exchange of gases takes place, that is oxygen from the alveolar air diffuses into the blood and CO2 from blood into the alveolar air. This is true. Next is, hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. ये एकदम उल्टा है. Hemoglobin has greater affinity for what? Oxygen. And fourth is, alveoli increase the surface area for exchange of gases. This statement is true. So A B C D में से कौन सा ट्रू होगा? दो हमें ट्रू मिले हैं, दो फॉल्स मिले हैं. हमें करेक्ट वाले सेलेक्ट करने हैं, इनकरेक्ट वाले वो एक बार हमेशा क्वेश्चन में रीड करना है. ट्रू वाले पूछे हैं हमें. ठीक है. सो ट्रू आर 2 and 4 which means option D. ठीक है, option D will be the correct answer here. Okay, let's see the next one. Question 4 states, which is the correct sequence of air passage during inhalation when we are breathing the air in. So what is the correct sequence? तो ये सी में तो पहले ही लैरिंग्स दिया है, फिर नॉस्ट्रल्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है. देन वी विल सी फर्स्ट वाले में nostrils yes, larynx pharynx no. larynx तो pharynx के बेस पे होता है, so this is also incorrect.
नेजल पैसेज ओके, ट्रैकिया ओके, नहीं ट्रैकिया के बाद फैरिंग्स नहीं आएगा, फैरिंग्स, लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया आता है ना? दिस वी हैव डन. So nostrils, pharynx, larynx, trachea. This one is the correct sequence. So the answer for question 4 is option number D. Okay. Sequence, please remember, sequence बहुत important है, ये आप याद रखो. ये inhalation का sequence और exhalation का, इसका ही आप उल्टा बना दोगे तो exhalation का है. So it's not a big thing. एक ही कोई भी sequence याद रख लो. Let's see the next question. During respiration, exchange of gases takes place in. Exchange of gases कहाँ होती है? Trachea and larynx? No. Alveoli? Yes. Alveoli ही है answer because alveoli is a site for exchange of gases. ठीक है, ये याद रखो. देखो, if they ask you the site for gaseous exchange in humans, then you will write alveoli. If they ask you site for respiration, site for respiration क्या है? That is each and every cell. अब वो एरोबिक होगी, एनारोबिक होगा, उसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया वो अलग अलग होगा. ठीक है. If they ask you the site for complete digestion in humans, इसका आंसर क्या होगा? This will be small intestine. So ये टाइप के क्वेश्चन आप जरूर याद रखो. द साइट फॉर यानी एग्जैक्टली कहाँ होता है ये प्रोसेस. ओके, रेशमी. ओके, टाइम टेबल you can surely see in the लर्न फटाफट यूट्यूब चैनल में. ओके, यूट्यूब चैनल में you can go to the लर्न फटाफट यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में आपको अपकमिंग सारे जो स्ट्रीम्स हैं वो मिल जाएंगे. एंड देन यू कैन ऑल्सो सी कम्युनिटी सेक्शन. देयर ऑल्सो यू विल गेट द टाइम टेबल. ओके रश्मि, इज इट क्लियर? ओके, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज these gases take place in alveoli. yes. थ्रोट नहीं, थ्रोट एंड लैरिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है. So the correct option for question 5 is B, that is alveoli of lungs. So students, this was about the respiration in human beings, and this also completes our second life process, that is respiration. So nutrition और respiration done, and the third life process जो हमें इसमें पढ़ना है transportation. ट्रांसपोर्टेशन वाला हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, which will be on Saturday same time. So if you have understood the concept in today's class, then do like the video and share it with your friends, and I'll see you in the next class. Take care. Bye bye.